Welcome student in Ed session from your textbook. Chapter number 2 is matter around dispute. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the concentration of solution, okay, by mass or by volume. So today we are going to discuss about the classification of solution. So when we dissolve a solute in a solvent, then a solution is formed. Okay, you know that very well. We can dissolve different amount of solute in the same quantity of the solvent. In this way, we can get many solution having different concentration of the same solute. A particular solution may contain less amount of the dissolved solute, whereas the another solution may contain the more amount of solute in it. For example, we can prepare many salt solution of different concentration by dissolving different amount of salt in the same quantity of water. So depending upon the amount of solute, okay, present, so the solution can be classified into two groups. They are unsaturated solution and saturated solution. Clear this one? Now we will start that. First, unsaturated solution. A solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature is called an unsaturated solution. Means आप उसका टेम्परेचर बिना इंक्रीज किए, ओके, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिजोल्व कर सकते हैं. So that solution is called the unsaturated solution. Clear this one? Now, next, saturated solution. A solution in which no more solute can be dissolved. Means ज़्यादा आप solute उसमें dissolve नहीं कर सकते. So, at that temperature is called a saturated solution. Clear this one? Means in this saturated solution means no more solute you have to dissolve in the given solution. Okay. So, that type of मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं कर सकते. सो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ वी हैव टू स्टार्ट द सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी मीन्स व्हाट? सो सॉल्युबिलिटी मीन्स डिजोल्विंग. ओके, मीन्स सॉल्युबल होने की जो कैपेसिटी उसी होती है, दैट टाइप ऑफ that things is called the solubility. Means जो process होती है उसे कहते हैं solubility. Okay, property, these are the properties of that solute. So the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 grams of solvent at a specific temperature is known as the solubility of that solute in that solvent. Clear this one? So this is the definition of the solubility. And solubility is means differ. Okay, means that solute means differ state in state. Okay, and that means it is depend on the solute also. Clear this one? So some points are there about the solubility. Solubility of solute in the solution decreases on cooling. Means अगर आपने decrease कर दिया, okay, means उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, मीन्स ऑन कूलिंग, तो सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी रहती है वो कैसी हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. अगर आपने टेम्परेचर भी डिक्रीज मीन्स कूलिंग, जैसे आपने देखा होगा इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर द शरबत, ओके, सो जब अगर आप उसमें आइस पहले ही मिला लोगे, क्लियर दिस वन, सो जो उसमें आप शुगर जब डालोगे तो वो जल्दी डिजोल्व नहीं होता, इट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी. क्लियर? सो मीन्स बिफोर एडिंग the ice we have to dissolve the sugar. Clear this one? So this is a simple example. Means you have to understand about that solubility of solute in the solution decreases on cooling. Clear? Now next, solubility of solute increases on heating. अगर आपने heat किया तो solute की solubility कैसी हो जाती है? Increase हो जाती. And more of solute can be dissolved on raising the temperature of the solution. If आपने temperature उसको increase कर दिया तो मोर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व होता है. ओके, सो ऑफ दैट सॉल्यूशन द सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन दैट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. नाउ नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी. क्लियर? So first we can understand about the solid in liquid. Means the effect of temperature and pressure on the solubility of substance
is differ, so that the solubility of solid, okay, solid in liquid usually increases on increasing the temperature. Means if we increase the temperature, then that solubility what solid in liquid. For example, there is a means that sugar in liquid, just example. So increases on increasing the temperature and decreases on decreasing the temperature. अगर आपने temperature decrease किया तो solubility of solids in liquids also decrease. अगर आपने temperature increase किया तो solubility of that solids in liquids will increase. Clear this one? Second, solid in liquid. Okay, solid in liquid. So remains unaffected by change pressure. Remember that. Okay, means we are studying here both temperature and pressure. So if that solid in liquid, solubility of solids in liquid remains unaffected by changing the pressure, means pressure का कुछ भी उसमें affect नहीं होता है. Clear this one? उसमें कुछ भी changes नहीं होंगे by changing the pressure. Next one, gases in liquid. So the solubility of gases in liquids usually decreases on increasing the temperature. गैस में लिक्विड की solubility decrease होती है, okay, if we increase the temperature. Clear this one? And increases on decreasing the temperature. अगर आपने temperature decrease किया तो solubility increase होती है gas in liquids, and अगर आपने temperature increase किया तो solubility of gases in liquids decreases. Clear this one? So these are the effect of the temperature and pressure on solubility. Now remember this point, solubility of different substance in water is different. Okay, means I told you before that means solid has the means so different kind of solid has a different solubility. Clear? So solubility of different substance in water is different. Okay, and you know that water is universal solvent, means it has a capacity to dissolve the things. Clear? So now next, while expressing the solubility of a substance, means जब आप किसी भी substance की solubility को बताना चाहते हो, express करना चाहते हो, then we have to specify the temperature also. Remember always, means अगर आपने solubility को उसको express कर रहे हो तो आपको उसका टेम्परेचर भी शो करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल हियर कॉपर सल्फेट. ओके, कॉपर सल्फेट दिस इज व्हाट सॉल्यूट. सो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है इन वाटर 21 ग्राम, मतलब 21 ग्राम आपने इसमें जब डिजोल्व हो रही इन वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस पे. कितने डिग्री सेल्सियस पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर सल्फेट मीन सॉल्यूट. ओके, डिजोल्विंग in that water. Clear this one? Now next point is physical and chemical changes. Okay, so there are some changes during which no new substance are formed. On another hand, means there are some other changes during which new substance are formed. So on the basis of whether new substance are formed or not, we can classify all the changes in two types: physical change and chemical changes. So we will now discuss first that physical change and later in that chemical changes. Clear this one? Now starting with physical changes. Clear? So those changes, okay, in which no new substances are formed are called physical change. Means in this change there is no new substance will form. Okay, मतलब इसमें new substance कुछ भी नहीं बनता है. So that kind of changes is called the physical change. In a physical change, the substance involved do not change their identity. Means उसमें identity वो change नहीं कर सकता in simply. So they can be easily returned to their original form by some physical process. So this means that physical changes can be easily reversed. Remember that physical changes can be easily reversed. The changes of physical state, that size and shape, state of a substance are physical changes. Means the changes in physical state change होगा उसका,
साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है. ओके, सो दैट काइंड ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस. So some common example of physical changes are melting of ice, okay, to form the water. So this is what state will change, okay, and freezing of water. This is what to form the ice. Here is also that state will change. Boiling of water टू फॉर्म स्टीम, इसमें भी स्टेट चेंज हो रही है. ठीक है, सो फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी चेंजेस. ये कैसे चेंजेस है? टेम्पररी. क्योंकि अगर आपने मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट हो रही है और फिर से उसको अगर आपने उसी वाटर को जो मेल्ट हुआ वाटर उसको फिर से फ्रीज में रख दिया तो फिर से क्या बन जाएगा? फिर से आइस बन जाएगा. ओके, सो फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी चेंजेस, वो परमानेंट नहीं होते. विच कैन बी रिवर्स इजीली टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंसेस. क्लियर दिस वन. और इसके आप अनदर एग्जाम्पल और ले सकते हो. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन, ओके, लाइट glowing of an electric bulb, breaking of a glass tumbler. So these are the that example of the physical changes. Clear? So now next there is a chemical changes. Okay, so those changes in which new substance are formed, means जब ये चेंजेस होता है तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो दैट काइंड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड द केमिकल चेंजेस. क्लियर दिस वन. सो सम एग्जांपल आर ऑफ दैट रस्टिंग ऑफ आयरन. दीज आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि फिर से ये रिवर्स नहीं होगा और इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. क्लियर. सो नाउ बर्निंग ऑफ पेपर. ठीक है, पेपर बर्न हो गया, उसके बाद से फिर से ओरिजिनल वो शेप में रिवर्स नहीं हो सकता. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मीन्स द मिल्क से कर्ड फॉर्म हो गया, पर कर्ड से फिर से मिल्क फॉर्म होगा क्या? नो. और सो दिस काइंड ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड द केमिकल चेंजेस. एंड केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस. ये कैसे चेंजेस होते हैं? परमानेंट. ओके, विच आर यूजुअली इरिवर्सिबल. और ये कैसे चेंजेस होते हैं? इरिवर्सिबल. क्लियर दिस वन. सो नाउ नेक्स्ट. सो there is means some differences are there. Okay, we easily differentiate between physical change and chemical change. Okay, in physical change no new substance will form, and in that chemical substance changes new substance will form. Okay, and that physical change are reversible and chemical change are irreversible. Clear. And physical change are that temporary changes and chemical changes are permanent changes. Clear this one. So these are the differentiate between physical change and chemical changes. Clear this one. Means in that physical change no property will change. Okay, same property, but in chemical changes so there is property will change. For example of that physical changes, melting of ice, freezing of water, and in that chemical changes, formation of curd, rusting of iron, burning of paper. So these are the example of that physical changes and chemical changes. Clear this one. So now we are going to discuss about the new topic. There is a separation of mixture. Okay, so methods. Many of that materials around are mixtures. क्लियर दिस वन. मीन्स जितने भी मटेरियल आपके अराउंड है वो सब क्या है? मिक्सचर है. सो दीज मिक्सचर हैव टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस. ओके, सब्सटेंस मीन्स व्हाट? कंस्टिट्यूएंट, मीन्स जिससे मिलके वो बने हुए. सो दे आर कॉल्ड द सब्सटेंसेस. मिक्स इन देम. ओके, टू और मोर देन टू. सो if that if may not be possible to use a mixture as such in homes and in industries, so we may require only one or two separate constituent of a mixture for our use. So we have to separate the various mixtures into their individual constituent to make them useful in our daily life. So the various constituents of mixture have different physical properties such as density, solubility, size of particle, behavior towards of magnet, okay, volatility, and that boiling point. So the differences, so these differences is the physical properties
of that constituent is used to separate them from a mixture. Clear this one? So that methods to be used for separating a mixture depends on the nature of its constituents. Means वो किस टाइप के कंस्टिट्यूएंट में उसका जो नेचर है, ओके, जो कंस्टिट्यूएंट्स है. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ए दैट मिल्क, ओके, मिल्क इज हैव द दैट क्रीम आल्सो इन दैट, ओके, इन मिल्क. सो मीन्स किस टाइप के उसमें कंस्टिट्यूएंट मिक्स है, उनके नेचर पे डिपेंड होता है मेथड्स को यूज करना. मतलब आप उसमें किस टाइप की मेथड यूज कर सकते हो, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट. तो सबसे पहले आपको उसका नेचर पता होना बहुत जरूरी है. सो द वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर separating the mixture: sublimation, magnet, solvent, filtration, evaporation, centrifugation, crystallization, chromatography, distillation, fractional distillation, and separating funnel. So these are the physical processes. Clear this one? Now, so we will study this as a there is a separation of mixture. We will consider the following three cases. Okay, to learn the separation of mixture we have to learn by in three cases. Mixture of two solids. Here is one. First आप लर्न करेंगे इसमें मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स. इसमें आप एग्जांपल लेंगे कि आप इनमें से कौन सी मेथड को यूज कर सकते हो, तो आप टू सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए. सेकेंड आप इसमें रीड करेंगे मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड. ओके, वी विल डिस्कस दिस ऑल थ्री. There is a cases in later in next session, but here is a simple introduction of these three methods. Okay, mixture of two solids, mixture of solid and liquid, and mixture of two liquids. ठीक है, मीन्स इसमें आप रीड करेंगे कि दो लिक्विड अगर मिक्स है तो आप उसको कैसे सेपरेट कर सकते हो. क्लियर दिस वन? सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस थ्री केसेस in detail one by one. Clear this one? Thank you.